Okay, so let's start. So first question. ओडा हमारा preamble ले नथिला. Economic liberty. हमारा liberty of कौन थिला? Thought, expression, belief, thought and essence. So thought अच्छी, expression अच्छी, belief अच्छी. Okay. Economic liberty. Justice. Justice का हमारा कौन है? Social justice. तो justice ता liberty में है. इटा हमारा कौन? Liberty ता हमारा justice रे आसीबो. Not sorry. Economic justice is not liberty. So the people of India having solemnly resolved to constitute Indian socialist citizen. Justice. Sir, voice clear नहीं. कौन कहलो? Voice clear आसुन sir. Voice clear आसुनी. Now it is clear. Yes, sir. Yes sir. Okay. So justice हमारा कौन कहले? Liberty. Justice है justice, social, economic, political justice है liberty, thought, expression, belief, both faith and worship. Okay. And equality of status, opportunity, and promote among them all. Fraternity and assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation. Date केबे हमारा adopt करा जायतिला हमें कहले 26 November 1949. Already हमें discussion करिथिले. Just rapidly हमें जिबा. The mind of the maker of the Indian Constitution is reflected in which of the following? Preamble. हमें कहले ना preamble हमारा थिला कोन? ना summary and essence of the Indian Constitution, identity card of the Indian Constitution बोली हमें कहूचे. तो सेति पई जे जो माने संविधान तयारी कले तांकर संविधान तयारी करिया पछरे तांकर थॉट कोन थिला हमर ए प्रियम्बल ले हमर मेंशन अछि. तो आंसर कोन हबो ना ए हिजबा हमर करेक्ट आंसर. One of the implication of equality in society. Equality माने कोन? In absence of कोन? Equality माने कोन? ना absence of privilege. Equality माने समस्त को इक्वल भाबरे देखिया काहा को स्पेशल प्रिविलेज दबानी, स्पेशल ट्रीटमेंट काहा को दबानी. सो absence of privilege होची हमरो equality. Okay. And equality तमे जानिचो हमर आर्टिकल 14 रे अछि equality before law and equal protection of the law. तो सेति पई हमें कहूचे ना absence of privilege. So equality means absence of special privilege to any section of the society and the provision of an adequate opportunity for an individual without any discrimination. तमे कॉमन लोक हो कि वीआईपी लोक हो, लॉ आगे समस्ते समान. All are equal before law and all are equally protected by the law. कितने नंबर आर्टिकल हमें कहूचे? 14. Okay. Now coming to the next question. Which one of the following reflect the most appropriate relation between law and liberty? कौन से? There is no law, there is no liberty. Okay. जदि liberty हमर केते बडा समय कहले liberty होची, liberty रो माने होची absence of restraint. हमें जहा चाहूचे करि परिया को हमको कोनोसी restriction नहीं, restraint नहीं. तो एटा हमर होची liberty. ओके. तो ए जो liberty हमर रहिला जदि कोनोसी जिंस रे हमें कहबा जे जो liberty जदि न थांता, restriction न थांता, law restriction कोथि पई आसुची, law पई जदि
there is no liberty, there is no law, there is no liberty. So eita gote amara, the term liberty means absence of restraint on the activities on individual, at the same time providing opportunity for the development of individual. So however, liberty does not mean license to do whatever one likes. तमरा लिबर्टी जो गु आउ जनकर लिबर्टी जेमती हार्मफुल न हो, मोर लिबर्टी हला जे मु कोन करबी ना म्यूजिक लाउड म्यूजिक सुनिया पे, ठीक अछि तमे लाउड म्यूजिक सुनो, बट राती 2 टा तमे जदी लाउड म्यूजिक डीजे बजे को सुने बजे नेक्स्ट नेबरहुड थिबो त से भी अफेक्टेड हबो ना, तो सेति पई योर लिबर्टी शुड नॉट हार्म. So one has to enjoy with the limitation mentioned in the Constitution. So concept of liberty is not absolute. So absence of law does not ensure liberty. Next question. In the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? Absence of restraint हमें कहले, लिबर्टी माने कोन ना तुमको कौन सी जिनस रे रेस्ट्रिक्शन करा जीवनी. सो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, तो एटा हो हमरो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट हो लिबर्टी, किंतु एई थिरे मोस्ट कोन पई तुमको लिबर्टी दिया जाउची ना गोटे ओवरऑल डेवलपमेंट पई, तो गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर फुली डेवलप वन सेल्फ. तुमको जदी लिबर्टी न था तमे फ्रीली जो जहा चाहूच कहिया पई, जो धर्म चाहूच नबा पई, तेनु लिबर्टी दिया जायची गोटे लोकर ओवरऑल डेवलपमेंट पई. तुमको रिस्ट्रेंट करा जाउनी गोटे लोकर डेवलपमेंट पई, सेति पई एटा होची गोटे अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली. ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग you accept as the most appropriate definition of liberty? So it is an opportunity to develop oneself fully. Okay, so D is the correct answer. So liberty रा ऊपर हमरा क्वेश्चन तमे देखु छ 2-3 टा पड़ी छी. So liberty माने कोन ना absence of restraint on activities of an individual. तमे जहा चाहू छ करि परिबो, ता ऊपर जदी कोनोसी रेस्ट्रिक्शन न रखा जाउची ताहले हमें देखो कोन कहबा ना लिबर्टी बोली कहबा. सो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप एटा भी परीक्षा रे पड़ितला. प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन. Okay, and liberty is not absolute. Qualified liberty with limitation mentioned in the Constitution. आमे जो कहले no law, no liberty. चारिटा जाका पॉइंट हमरा परीक्षा रे पड़ितला. You have to remember these 4 points. Okay. 2020 रे गोटे क्वेश्चन पड़ितला, प्रिएम्बल ऊपर पड़ितला, कोन हबो? फास्ट कथा कुआ तो प्रिएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? कॉन्स्टिट्यूशन नोटे पार्ट के को जजमेंट रेट आसिला केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 रे. ता पूर्वरु गोटे हमरो बेरोबरी केस रे कोन कहैतला प्रिएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एलआईसी केस एतला हमरा आसीबो से केस रे कहबो जे प्रिएम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन, ओके, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तेनु एइथरु देखुछ जे प्रिएम्बल होचे पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ तमे जानि छ दिस इज नॉन जस्टिसेबल, माने they has no legal effect independently on other part. So it is a part of Indian Constitution and non justiciable. So कौन सी legal effect करो? So preamble of Indian Constitution serve as a brief introductory to the statement. हमें कौन से summary or essence of the Indian Constitution हमें कहले. बीरोबरी केस 1960 हमें कहले ना preamble is not an integral part of Indian Constitution से केस रे कह दे. So therefore it is not enforceable in a court of law. किंतु 1973 केशवानंद भारती केस रे ओवररूल करा गला earlier decision को and कहा गला जे yes जोडा में earlier जो जजमेंट देथिल सेटा रॉन्ग,
ए केशवानंद भारती केस से कुआ गला जे preamble is a part of basic structure of the Indian Constitution and preamble is an integral part of Indian Constitution. हमर again 1995 रे LIC Government of India versus LIC केस रे Supreme Court again कहिला जे हमर preamble टा integral part of the Indian Constitution. तेनु एटा जो परीक्षा रे पढुची is preamble is a part of Constitution. Yes. तो को केस रे ना प्रथमे बिरगोरी केस रे कहिला इट इज नॉट ए पार्ट और केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 रे एटा कहिला यस इट इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगेन 1995 एलआईसी केस रे कुआ गला यस इट इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट यू हैव टू रिमेंबर इट इज नॉट ए सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इट आर नॉट जस्टिसेबल भी हमर एटा ओके salient feature of Indian Constitution सातटा क्वेश्चन हमर पडिछ ओके तो हमें देखिबा इथरे कोन कोन पडिछि which one of the following is not a feature of federalism कौन हबा हमर आंसर ओके हमर जो फेडरल स्ट्रक्चर हम देखिले बाइकैमरलिज्म कथा में कहि जे बाइकैमरल माने कोन दा दीटा हाउस रहइबो अपर हाउस लोअर हाउस रहिला और तमे कहबो पावर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट भीतर रहिला ओके सो पावर आर क्लियरली डिवाइड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट तापरे हम रहउची फेडरेशन वी नीड हैव गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्य सभा there is an independent judiciary in India yes आउ किंतु हमर जो फेडरेशन क्रिएट करा हिची एटा कोन गोटे एग्रीमेंट हिची की स्टेट मानक संगे कोन हम एग्रीमेंट करिचे स्टेट जते बेले चाहिबो फेडरेशन रु बाहर की जाई परिबो की नो सो इट इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेशन यूनिट तो एटा हमर रॉन्ग अछि से पचे जे कोडा हमर नुहे तो आंसर कोन ना डी हेजबो करेक्ट आंसर तेनु हमर फेडरल स्ट्रक्चर कौन कौन इंपोर्टेंट तमरो परीक्षा रे बहुत टाइम रे पढुची जे तमरो दीटा गवर्नमेंट रहउची यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर और स्टेट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहउची सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहउची रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बाइकैमरलिज्म एगुडा काम रहउची कोन आ फेडरेशन किंतु मोर ओवर द टर्म फेडरेशन ता नो वेयर यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कोठी मेंशन नहीं हमर फेडरेशन So article 1 कौन कहूची on other hand कहूची जे India as a union of state which implies two things one Indian federation is not a result of an agreement by the states second no state has the right to succeed from the federation जते बेले चाहिबे जे हमरो इंडिया रु हमें कहबा जे एबे जम्मू एंड कश्मीर कहूची हम तुम संगे रहिबुनी ओके तो सेमिति हबनी तो देश जो गुडा का हमरो इंडिया रो गोटे पार्ट हे के अछन से माने मन इच्छा छाडी के जाई परिबे हमरा इनती गोटे एग्रीमेंट हेनी जे नहीं तमे जते बेले चाहिबो इंडिया संगे रहि परिबे तले चाहिबो तमे बाहर के जाई परिबो सेमिति किछि एग्रीमेंट हेनी तो एथिरे इंडिया फेडरेशन इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बाय द स्टेट सेकंड कथा हला से माने हम फेडरेशन रे रहिले बी से माने जते बेले चाहिबे छाडी के जाई परिबे ना दीटा पॉइंट तमे मन रख कारण ये दीटा पॉइंट ही हमारा फेडरेशन को नहीं की पढुची हम फेडरल स्ट्रक्चर कौन कौन क्राइटेरिया तमरो और कौन कौन बेसिक फीचर अछि सेडा का मन रखिबो डिवीजन ऑफ पावर हला टू गवर्नमेंट हला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहला इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बाइकैमरलिज्म ए सबुडा को रहउची हां एठी देखा हमें कौन कहले इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एटा होचे हमर फेडरल स्ट्रक्चर किंतु इंटीग्रेटेड जुडिशियरी माने देश पई गोटिए ही हमर सुप्रीम कोर्ट दैट इज यूनिटेड ओके तेनु जदी इंटीग्रेटेड जुडिशियरी देछि एटा गोटे यूनिटरी फीचर ओके while independent judiciary is a federal feature integrated judiciary is a unitary feature so relation between judicial independence and judicial federalism and indicated in the first option as asked in 2021 रा prelim रे हमरा पचरा है ओके
अच्छा ये क्वेश्चन हमें ऑलरेडी डिस्कशन करथिले कोन हबो 2018 क्वेश्चन हम्म 2018 पढ़िथिला और 2023 रे पढ़िथिला सेंटेंस Parliament of India can place a particular law in 9th schedule of the Indian Constitution. The validity of the law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court or judgment can be made on it. तमरो आमे कहिले फास्ट हमर 9th schedule रो कांसेप्ट हमर केबे आसीबो फास्ट अमेंडमेंट एक्ट केबे हितिबो 1951 में कहा समय रे जवाहरलाल नेहरू सेतोले हमर प्राइम मिनिस्टर सेतोले हमर कोन हबो ना ए फास्ट अमेंडमेंट रे हमर मेजर कोन हेतिबो जमीदारी सिस्टम अबोलिशन हेतिबो लैंड रिफॉर्म हेतिबो जण जण को पाखरे 2000 एकर जमी राजा को पाखरे गोटे लोक पाखरे बिल्कुल जमी नाही तो हमें कोन कले ना तमरो लैंड रिफॉर्म रे लैंड सीलिंग कले हमें कहले जे 200 एकर रु अधिक के रही परिबेन तो 2000 एकर रु 200 एकर हमें कोन कले तांकु देई कि बाकी धर हमें 1500 की 1600 एकर आनिले जो मानकर जमी नाही तांका भितरे बांटिले तेनु तमर 1000 एकर जमी अछि मु तुमको 200 एकर देई कि 800 एकर तल आनिली तमे कहले मोर फंडामेंटल राइट वायोलेशन हैला कोन फंडामेंटल राइट वायोलेशन हैला ना राइट टू प्रॉपर्टी 31 रे तो तमर प्रॉपर्टी अछि मु तमटो छडे कि नहीं आसिली तो तमरा प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट वायोलेशन हैला तो एमाने कहिले इवन इफ हमें 9th शेड्यूल जो लॉ गुडा को रखुचु जदी भी सेटा फंडामेंटल राइट को वायोलेशन करूची फिर भी तमे कोर्ट को जाई कि फंडामेंटल राइट पाई एनफोर्स करी कि ए लॉ टा को तमे ए लॉ अगेंस्ट तमे एक्शन नै परिबो ना तो 9th शेड्यूल जो गुडा को रहिला तो से गुडा को हमरो जुडिशियल रिव्यू हमरो प्रोटेक्शन मिली गला ताको इम्यूनाइजेशन ताको मिली ता माने तो गवर्नमेंट जहा चाहिबो सब तो हमरो 9th शेड्यूल भितर रखी कि कहबो ना एरा 9th शेड्यूल रहि गला आ ता आगे अगेंस्ट तमे ताको कोन ना किछि रिव्यू करि परिबोनी एंड ताको नॉल एंड भॉइड हमरो करि परिबो नै किंतु ए जो केस ताको हमरो जो हमें कहले को केस रे आईआर केस रे 2007 रे आसिला जे नाही तमे जहा भी रख ए जो हमरो 9th शेड्यूल ले इट शुड बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल जदी देखा जिवो जे आ भितर जहा अछि से गोडा का वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वायोलेशन होची और फंडामेंटल राइट रो वायोलेशन होची तो सेटा के एग्जामिन करा जिवो रिव्यू कला पर जदी एटा बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेशन करछि ताहाले कोन करा जिवो नल एंड भॉइड एटा हमरो करा जिवो ओके मो वॉइस ठीक रे सुबुनी की माने आउ टिके जोरे कहया को कोनथंदी इट्स ओके कि नहीं क्लियर सर ओके तो इथिरा हमर ताले कोन हिजबा आंसर ए हिजबा आंसर यस 9th शेड्यूल रे पार्लियामेंट कैन प्लेस ए पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किंतु वैलिडिटी ऑफ द लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट नो जजमेंट कैन मेड सेटा आगुरु होउथिला किंतु आईआर ए लोको केस परे हुआ गला जे इवन इफ एटा 9th शेड्यूल ले अछि इट शुड बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू को सब्जेक्टेड हो पारे ओके तो आंसर कोन हबो ना ए हे जो हमरा करेक्ट आंसर तमरा प्रथमे हमें कहिले ए 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केबे आसला फास्ट मने रखिबो फास्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आसला तो एथिरे कोन होरा गला जे कुहा गला जे जो गुडा का हमरा लॉ आ भितर रखिबो ताको प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला दिया गला पर्टिकुलरली लैंड रिफॉर्म जेतले हमर करा जिवो तो जो तमे जेतले जनठू लैंड रिफॉर्म रे जमीन नेलो तारो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट तार वायोलेशन होछि तो जा फरे कि तमे से कोर्ट को जाई कि तमको कोन करि परिबो केस करि परिबो किंतु ए केस रे ए लैंड रिफॉर्म केस रे तमे कोर्ट को जाई कि केस करि परिबोनी काहे कि ना हमर एटा 9th शेड्यूल रे रखा हमरा जेतबे हमें कहूचे लैंड रिफॉर्म आल्सो नीडेड एज ए
गवर्नमेंट विश टू इम्प्लीमेंट 39B आउ C 39B आउ C रे कोन ना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स एंड वेल्थ गोटे राजा पाखरे 2000 एकर जमी अछि किंतु 50 जन को लोक पाखरे बिल्कुल जमी नाही तो सेठु आनी कि समस्त को 2 एकर 3 एकर लाखे दे दियो ओके सो दैट आमे जो रिसोर्स ता अछि समस्त को भितरे डिस्ट्रीब्यूट हे जबो तो एई केस रे जेतले राजा ठो हमरो जागा नौ छ तांगा राइट टू प्रॉपर्टी वायोलेशन होची तो वायोलेशन हेले भी हमरो सेटा को तमे जुडिशियल रिव्यू पावर यूज करी कि नल एंड भॉइड करि परिबो नाही जोटा 9 तो किंतु कुआ गला जे आईआर कोइले केस रे कुआ गला जोउडा मन 9 शेड्यूल रे रहिबो आर ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटिनी 2007 रे कुआ गला जे तमे 9 शेड्यूल रखिले भी सेगुडा का हमें कोन करि परिबा जुडिशियल स्क्रूटिनी और रिव्यू करि परिबा सो सच लॉ डू नॉट एंजॉय ए ब्लैंकेट प्रोटेक्शन सो लॉ प्लेस्ड इन 9 शेड्यूल आफ्टर केशवानंद भारती केस रे जो अप्रैल 24 पर जेतक लॉ अछि एथिरे रखला जायछि तो सब गुडा को हमरो रिव्यू करा जिवो आ जदी एटा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेशन करूछि तो सेटा को हमरो नल एंड भॉइड कैंसिल कर दिया छै ओके 2019 रे आकुने कि क्वेश्चन पचरा जायतिला 9 शेड्यूल वाज इन न्यूज बिकॉज़ कोटा एजिटेशन बिटवीन 2015-17 रे प्रतिदार जाट कम्युनिटी मराठा कम्युनिटी को दिया जायतिला डिमांड फॉर रिजर्वेशन बीइंग प्रोटेक्टेड अंडर 9 शेड्यूल ओके ओके एटा भी हमरा पढितला जे 9 शेड्यूल वाज 2019 रे इजी क्वेश्चन पढितला इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप हमें कहले किए ना हमरा जवाहरलाल नेहरू कौन हम केते नंबर शेड्यूल रे तमे ओटे ट्राइबल एरिया रो जगह को तमे प्राइवेट लोक को देई परिबन लैंड माइनिंग पाई 5th शेड्यूल ओके वेरी गुड सागरिका सुरेन सब्यसाची शुभश्री शुभलक्ष्मी मनस्मिता ओके तो मन रखिबा 5th शेड्यूल 2000 हमर 19 रे क्वेश्चन ता पडितला अंडर व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कैन ट्रांसफर ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड भॉइड जति ओटे 5th शेड्यूल जो ट्राइबल एरिया अछि तमे ओटे प्राइवेट लोक को देई देलो ताहाले सुप्रीम कोर्ट सेटा को नल एंड भॉइड कर दबो हमरा क्लासिक एग्जांपल ओडिसा रे हेतिला वेदांत रो जो हमरो केसेस हेतिला वेदांत एरिया रे हमें कहले नियमगिरी रे वेदांत रो जो हमरा माइनिंग करूतले सेठिकार लोकल ट्राइबल लोक माने प्रोटेस्ट कले कि यू कैन नॉट डू द माइनिंग हियर ग्राम सभा रे ता पई हमरो प्रोटेस्ट भी तांकर अगेंस्ट रे भी स्टार्ट हेतिला लांजीगढ़ रे नियमगिरी रे भी हमरा हेतिला तो सी जेतले मन्ना कले सुप्रीम कोर्ट को जेतले केस ता गला सुप्रीम कोर्ट कहला जे ग्राम सभा जो डिसीजन निया जायछि आउ तमे ओटे ट्राइबल एरिया रो लैंड कोटे प्राइवेट कंपनी को देई परिबनी तमे माइनिंग पाई और सेठी बंद कर दिया गला माइनिंग लांजीगढ़ हम जो कहूचे नियमगिरी हमरो रे हमरा वेदांत रो कंपनी को जो माइनिंग करिया को सेठी बंद कर दे देथिला तेनु एइथिरे होची 5th शेड्यूल ले जो ट्राइबल एरिया गुडा को अछि नहल तो सब गवर्नमेंट कोन करिवो जे सब ट्राइबल एरिया गुडा को जंगल एरिया गुडा को दे दबो सब काहा को प्राइवेट प्लेयर को तो सेही पाई तो मायावादी माने काहे के क्रिएट होछन जत्ते बेले तांको जंगल जमीन हमें तांको ठू छड़े कि नै गोटे प्राइवेट प्लेयर को दउछ आ तांको प्रॉपर रिहैबिलिटेशन से माने को बेनिफिट दउ न तो से माने वॉइस रेज करिवे आ पर्टिकुलरली गवर्नमेंट अगेंस्ट रे फाइट करिया को स्टार्ट करिवे ओके तो एइथिरे कोन कराइ छी ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोन करि छी प्रोवाइड्स ऑटोनॉमी टू द ट्राइबल एरिया को ऑटोनॉमी देइ छी कोथिरे इन द मैटर ऑफ गवर्नेंस अंडर 5th आउ 6th शेड्यूल रे इसलिए कोन कहा जाउ छी ना व्हिच इज फर्दर fortified by Samatha versus State of Andhra Pradesh 1997 no judgment re Supreme Court declared that
the transfer of tribal land to private parties for mining was null and void under 5th schedule. तमे जदि गोटे ट्राइबल एरिया को गोटे प्राइवेट कंपनी को माइनिंग पई देइछ ताले सेही जो लॉ टा कैंसिल हो ओके तो मोर हमर प्रोटेक्शन टू द 5th शेड्यूल और ऑटोनॉमी टू द 5th शेड्यूल एथिरे हमर दे दे so eithre be the framework protection of the right of the tribal indigenous people further strengthen amara forest right act 2006 रे जो आस्तिला सेइथिरे फॉरेस्ट उपरे एक्सक्लूसिवली राइट रहबो कारण ना ट्राइबल लोक मानकर सेइति जो ट्राइबल लोक मान रहउछन तांकर amara एक्सक्लूसिव amara राइट्स रहबो सो अनदर क्वेश्चन हमर 2022 रे भी पडिथिला 2022 रे सेम ट्राइबल जो 5th शेड्यूल को नेकी पडिथिला ओटे क्वेश्चन थिला in a particular area if a particular area is brought under 5th schedule of the Indian Constitution which one of the following statement best reflect the consequence of it कौन हबो ताले so they should prevent the transfer of the land of the tribal people from non-tribal to non-tribal people okay so एटा तमे इजीली ट्रांसफर करि परिबो ना सो ए हे जिबा हमरो करेक्ट आंसर एसेंशियल फीचर हमर कोन ना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी होची हमरो गोटे एसेंशियल फीचर ऑफ द फेडरलिज्म हमें जो फेडरलिज्म रो कैरेक्टर छुडा पढिथिले त ता भितरे हमें कहिथिले जे हमरो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहउची सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन ऑफ पावर ओके इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी बाइकैमरलिज्म डुअल गवर्नमेंट ओके इंटीग्रेटेड जुडिशियरी हले एटा यूनिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी हले सेटा हमरो कोडा हमरो नुहे एटा ऑलरेडी हमें कहि देछे आज रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट हमें ऑलरेडी एटा डिस्कशन करिछे तो एंटी डिफेक्शन को नेकी ओटे हमरो क्वेश्चन पडिथिला कोन हबो देवव्रत बोथ साना बी लिप्सराणी बी सागरिका मनोरंजन बी बी रितिश ओम बोथ बहुत पिला बी और सी भितर कंफ्यूजन होउछंती अच्छा प्रथम दले कोडा एंटी डिफेक्शन लॉ अनुसार कोडा हमरो ठीक अछि law specified a nominated legislature cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house ओके तो एटा हमरा कोन होची उल्टा कथा कहै छै सी 6 मास भीतर जदी जॉइन करूची डिस्क्वालीफाई हबनी 6 मास पर जदी सर भॉइस सर भॉइस आसुनी सर भॉइस आसुनी
ओके तो फास्ट स्टेटमेंट कहीं की रॉन्ग अछि ना जदी गोटे पॉलिटिकल पार्टी जने जॉइन करिया को चाहूची नॉमिनेटेड मेंबर से 6 मास भीतर जॉइन करिवो अदरवाइज 6 मास पर जदी जॉइन करिगला ताल सेटा हमरो डिस्क्वालिफाइड है तो एठी कैन नॉट जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विदिन 6 मास भीतर से जॉइन करि परियो सेति पे स्टेटमेंट हमर रॉन्ग अछि कैन नॉट नो कैन जॉइन ए पॉलिटिकल पार्टी विदिन 6 मंथ सेकंड the law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decided the defection case तो एटा हमरा ऑलरेडी कोठी मेंशन नाही ओके हमें ऑलरेडी डिस्कशन करिथिले जे एंटी डिफेक्शन लॉ केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे आस्तिला 42nd अमेंडमेंट एक्ट आस्तिला का समय रे ओके केते नंबर शेड्यूल रे अछि ओके 10 शेड्यूल रे हमरा अछि आउ तमे आमे कहिथिले जे जदी जने इंडिपेंडेंट मेंबर जदी गोटे पॉलिटिकल पार्टी रे जॉइन कला ताले से डिस्क्वालिफाई हे जिवो ना हपन हे जिवो तमे जदी वॉलंटरी गिव अप कलो मेंबरशिप डिस्क्वालिफाई हे जिवो किंबा तम पार्टी जो लाइन रे कहिछि वोट दवा पे इफ यू आर एब्सेंट फ्रॉम वोटिंग इन द पार्टी लाइन ताले डिस्क्वालिफाई हे जिवो किंबा जने नॉमिनेटेड मेंबर जदी आफ्टर 6 मंथ पर जदी जॉइन कला ताले डिस्क्वालिफाई हे जिवो को केस रे डिस्क्वालिफाई हबनी जदी पार्टी टा स्प्लिट होची स्प्लिट को केस रे हुए ना हमरो 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्टी जदी जॉइन करूछन जेमति कि हमें कहले जो हमरो शिवसेना रे 55 जन थिले 49 जन सेथु बाहरी की हमरो गोटे सेपरेट पार्टी करी की शिवसेना पार्टी करी की हमरो गवर्नमेंट फॉर्मेशन कले त सेही केस रे तमरो स्प्लिट केस रे हमरा डिफेक्शन डिस्क्वालिफाई हुअंती ओके तो ये जो 2/3 हमरा नंबर हमरा एटा केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट आसिला ओके 91st अमेंडमेंट एक्ट रे हमरा आसीथिला कि जदी तमे 2/3 मेंबर को जदी बाहर के गोटे पार्टी रे जो जॉइन करछंती ताहले सेटा हमरा डिफेक्शन जीवन Democracy's superior virtue lies in the fact that it calls into activity into कौन हमारा आंसर है 2017 रे पढ़िथिला एटा पुलिन पूर्णिमा सागरिका समस्ते ए कहउछन प्रियदर्शिनी अकस्मिता सिप्रा रोजालिन मुन्ना तमे कौन कहछ ए हवा हमारा करेक्ट आंसर ओके ए हिज हमारा करेक्ट आंसर सो डेमोक्रेसी सुपर virtue lies in fact that it calls into activity तो डेमोक्रेसी रे एटा होची सुपरियरिटी कोन कॉमन लोक माने जहा को चाहिबे बाछि परिबे 25 वर्ष हला जदि नवीन सरकार थिला ए कॉमन लोकन जबु आ 25 वर्ष पर जदि नवीन सरकार नाही ए लोक माने को जबु ना नहीं लोक मानकर जो ऑर्डिनरी मेन आ वुमेन रहिले सेमानकर इंटेलिजेंस यूज करी कि से जहा को चूज करिवे ही विल बी द पावरफुल पर्सन डेमोक्रेसी रे से माने ही ना नहीं तो एटा होची डेमोक्रेसी रो सुपरियर किए ना लोक मानकर इंटेलिजेंस तमे यू कैन नॉट बाय द इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन जत्ते पैसा लगे दियो ना इलेक्शन रे पैसा लागी नथिला फिर भी हमर कहीं कि गवर्नमेंट 25 वर्ष परे हारी जीवो ना लोक माने जहा को चाहिबे
नहीं के आसी यदि 5 वर्ष पर आंको यदि बीजेपी सरकार भल न लागिला पुणी आउ का को नहीं के आसी परिबे ओके तो टोटल डिपेंड करूची द इंटेलिजेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन ओके सो आंसर कौन हबो ना ए इज द करेक्ट आंसर द ऑब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू मिल्स तांका व्यू अनुसार कौन ना बीइंग अटेनमेंट टू द वैल्यू एंड द वर्च्यू इन men their self development it is essential that the government should be those who self development is being sought this is only possible when people participate in the making and working their government or the government is truly represented the principle underlining the cabinet form of government रे हम बहुत थर कहि छे cabinet form of government रा कोडा important characteristics देवव्रत सी मनस्मिता सी श्रीजय कुसुम सागरिका सुनील ओम कौन हबो See, a mechanism जो थी parliamentary democracy for ensuring collective responsibility to the of the government to the people only. Okay, collective responsibility to the people only. आउ गोटे आर गोटे कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे आउ गोटे मने रखिबो ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पांसिबल टू लोकसभा ओनली as long as they have the number in the lok sabha से पर्यंत से माने गवर्नमेंट रे रहिबी the moment they lost the majority in lok sabha ताका गवर्नमेंट भांगी जीवो आउ गोटे स्टेटमेंट पड़े तमरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तमरा और एग्जीक्यूटिव आर रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर दिस एग्जीक्यूटिव को माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो से माने रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर माने कोन तांकर डिसीजन पई से माने को क्वेश्चन पचरा जाई परिबो से माने को अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस आना जाई परिबो से माने प्रूव करिवे जे दे हैव द मेजॉरिटी तो एग्जीक्यूटिव आर रिस्पांसिबल टू द answerable to the legislature man okay tenu eida mane rakhiba collective responsibility of the government to the people hela kimba council minister responsible to lok sabha only kimba executive are responsible to the legislature ei tinta ka statement hamara parikha re paduchi ote parliamentary form of government ro major characteristics ei tinta ka tamra तो कोन एथिरे ना तमरा पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे तीनटा पॉइंट द मेन फीचर ऑफ द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया कोन ना प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव किए प्रेसिडेंट रहिले गवर्नर रहिले तो माने नॉमिनल एग्जीक्यूटिव रियल एग्जीक्यूटिव किए ना हमरा पीएम रहिले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर माने रहिले पीएम हमें रियल एग्जीक्यूटिव कहले मेजॉरिटी पार्टी रूल्स तो जार मेजॉरिटी अछि तो सी गवर्नमेंट फॉर्मेशन करिबो तमे निजर ओन मेजॉरिटी हो और कोलिशन पार्टी हो तो दे विल रूल द कंट्री सेकंड कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर एटा भी माने रखिबो जे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पांसिबल टू लोकसभा और जो एग्जीक्यूटिव माने रहिले और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहिले दे आर रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर माने एमपी और एमएल माने को रहिला मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर जदि तमे जने मिनिस्टर होउछ यू शुड बी आल्सो ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जदि भी तमे नुह समाज भीतर तमे गोटे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली गोटे मेंबर जदि तमे स्टेट रा मिनिस्टर तमे धरा नुहे समाज भीतर कोनोसी तमे एबे जदि हमर हाइपोथेटिकल सिचुएशन कोआ जाउची जे जदि धर्मेंद्र प्रधान सपोज एथरा एमपी टी आइथले और सी सपोज लॉबी भी करूथिले हमर चीफ मिनिस्टर का पई किंतु कंडीशन एया हला जे नरेंद्र मोदी कर अवस्था बहुत खराब द इन द सेंस माने गोटे एमपी को भी एबे छाड़ी परिबेली जदि एबे 300 वोट आस्ता तांकर क्लियर मेजॉरिटी थांदा मे भी धर्मेंद्र प्रधान सपोज कहि थांदे चीफ मिनिस्टर का पई सेतले भाबी थांदे काना हमर तो क्लियर कट मेजॉरिटी अछि ता परे जे तमे छाड़ी दउछ स्टेट रे जाई कि चीफ मिनिस्टर हबो ठीक अछि किंतु सेटा चैलेंज जदि हमर सपोज धर्मेंद्र प्रधान एबे चीफ मिनिस्टर हेतंदे
तो डायरेक्टली जने एमएलए न हे कि चीफ मिनिस्टर हे परथेन ना हे पिन थांते हे परथाने पुणी तापरे कोन हे थांदा काहा को जण को कहि थांते तमे रिजाइन करो तो सेठी बाई इलेक्शन आउट रे थांदा सीए सेठी बाई इलेक्शन में जीती के आउट रे एमएलए हे के आसी तो ये कंडीशन हमर हे थांदा इवन इफ यू आर नॉट ए मेंबर you can become a minister provided 6 months भितर you should become a member of यदि सेंटर रे हो जो पार्लियामेंट रो मेंबर लोकसभा राज्यसभा रो किंबा हमरो स्टेट रे यदि विधानसभा किंबा विधान परिषद रो सर बाई इलेक्शन रे जदी सर बाई इलेक्शन रे जदी जने हारु छन आउ थरे कोन इलेक्शन हबो ना आउ जने हेबे चीफ मिनिस्टर बाई इलेक्शन रे यदि जने हारि जाउछंदी सपोज बाई इलेक्शन में हारि गले आगे ताले आउ थरे आउ जणो कहबे रिजाइन करिया पे सेठी बाई इलेक्शन से तो चीफ मिनिस्टर एई छंदी ना जो पर्यंत 6 मास न पुरीची से रिजाइन करिवेनी से आउ कोठी इलेक्शन करके मास भीतर हेजबे देखिबे कोडा सेफ सीट हमरो 100% जितिबार चांस अछि हैं कोडा मोहम्मद बनाजी ओके योगी आदित्यनाथ भी से बडा से तो जेतले चीफ मिनिस्टर हले सेतबेले तो यूपी रे कोन सी एमपी एमएलए नथिले ना सेंटर एमपी रु डायरेक्टली आनी के देखो चीफ मिनिस्टर करा जायतिला ओके लास्ट टाइम जो हमरा जेमति की एस जयशंकर हले फॉरेन मिनिस्टर हले तो सही समय से किछि नथिले ना लोकसभा ना राज्यसभा किछि मेंबर न तो तांको डायरेक्टली आनी के हमरा फॉरेन मिनिस्टर करा गला पारे राज्यसभा को तांको नै के आसिले ओके एटा भी पढ़िथिला तमरा 2020 रे भी ए क्वेश्चन पढ़िथिला द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तीन चारिटा तमे पॉइंट माने रखिबो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव मेजॉरिटी पार्टी रूल कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पांसिबल टू लोकसभा ओनली ओके ए सब बुडा तमे डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस लोकसभा और विधानसभा हमरा डिसॉल्व करा जाय मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो मेन एडवांटेज कोन हमें कहले एग्जीक्यूटिव आर रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर सेम कांसेप्ट को बुले बांके की तमरो क्वेश्चन फ्रेम करा इफ यू नो द कांसेप्ट जे पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे ए तीन चारटा पॉइंट मन रखिबा परीक्षा रे जहा पढिबो यू विल एबल टू तो सेहि पय हमें जो रैपिड रिवीजन ने करूचे जो क्वेश्चन गुडा को पढुची जो कांसेप्ट गुडा को पढुची तमे से गुडा को पई मोर फोकस करा और मोर मन रख तमे जदी एत्ती की करि देलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करी की जदी को कांसेप्ट गुडा करी की पढी देलो डेफिनेटली तमरो फ्रेंड कारण सेइटा ही हमर टोटल पॉलिटी रो कांसेप्ट जदी पढिबो ए चैप्टर रो एत्ती की ही पढिबो सेति पई ओपीएससी और यूपीएससी रो क्वेश्चन एनालिसिस करिबा मस्ट जदी सेति की करि देइछा और लास्ट 6 मंथ रो करंट अफेयर्स पढी देइछा ताहाले यू आर इन प्रीलिम रे तमरो सियोर शॉट होछ ओके सब सब्जेक्ट पई केवल पॉलिटी पई नहे यू शुड डू इट फॉर हमरो ज्योग्राफी हला हिस्ट्री हला इकोनॉमिक्स हला तो सब सब्जेक्ट पई तमरो एनवायरनमेंट रे ओपीएससी रा उटे फेवरेट एरिया हला तमरो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज ऊपरे किबा ओजोन लेयर डिप्लीशन ऊपरे नहले पडिबो बायो रेमेडिएशन बायो मैग्निफिकेशन ता ऊपरे क्वेश्चन तमरो सब वर्ष बेले बेले हमरो पढुछ तेनु से कांसेप्ट गुडा को तुमको निहाती जानिबा दरकार सेति पई तमे प्रीवियस क्वेश्चन मस्ट करि के जाओ ओके सर दिशा पब्लिकेशन रे जो बहिटा पब्लिश हेबार थिला सेटा हैला की सेटा आसुची आ वेट करो हमें डेट दिया है 15 तारिख भीतर आसीबार अछि ओके हमें एंड हेतिरे हमरो दिशा पब्लिकेशन रे माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमति था जो जोडा इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर प्लस करंट अफेयर्स प्लस जोडा न्यूज रे अछि तो सब गुडा कवर करे ओके एंड हमें सेटा गोटे थरा प्रैक्टिस करके जीव निहाती सेटा तमे प्रैक्टिस करियो हम मॉक टेस्ट से सेटा ऑनलाइन अवेलेबल होबो मिलिबो मिलिबो ऑनलाइन ऑफलाइन दीटा आगे मिलिबो एंड दिशा वाला थ्रू आउट ओडिसा रे सेवन डिस्ट्रीब्यूट कर देबे जो दिन रिलीज हेबो बाय सेकंड डे रे हमरा थ्रू आउट ओडिसा रे सब बुक स्टोर ओके सेटा तांकर काम से डिस्ट्रीब्यूशन दीटा बही बाहरिबो कि गोटे नहीं गोटे बही बाहरुची 30 टा हमरा जो 20 टा रहउची जो जीएस रा रहउची सी सैट रा रहउची 5 टा रहउची प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 22 23 रा सॉल्व पेपर अछि ओपीएससी ओके
हेलो सर मैन पाई भारी पकी से 20 टा कोन GS1 कोडिएटर ओके तो आउ गोटे देखिबा हमर कंपेयरिंग द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे कोन कोन हमर कंपेयर रे रहउची ओके तो हमर होची डुअल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंशियल हमर सिंगल एग्जीक्यूटिव रहउची एठी हमर मेजॉरिटी पार्टी रूल तांकर प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर इलेक्टेड सेपरेटली फॉर फिक्स्ड टेन्योर हमर कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटीज रहउची माने काउंसिलर मिनिस्टर रेस्पोंसिबिलिटी रहले एठी हमर नॉन रेस्पोंसिबिलिटी हमर पॉलिटिकल होमोजेनिटी रहउची ये पॉलिटिकल होमोजेनिटी मे नॉट एग्जिस्ट एठी हमर डबल मेंबरशिप एठी हमर सिंगल मेंबरशिप रहउची लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर तांकर प्रेसिडेंट रहउची तांकर लोअर हाउस को डिसॉल्व करा होची तांकर नो डिसॉल्यूशन ऑफ लोअर हाउस फ्यूजन ऑफ पावर एठी सेपरेशन ऑफ पावर ओके तो एटा होचे हमरा कोन ना पार्लियामेंटरी फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म रे मेजर रहउची 2020 रे गोटे क्वेश्चन पडितला Okay, so government is responsible to the parliament and can be removed by it जदि parliament तमरो जो majority loss करी गला लोकसभा रे यदि majority loss करी गला ताले तमरो government भांगी छी okay so कौन हबो B हिजबा हमरा a constitutional government by definition is a कौन हबो लिमिटेड गवर्नमेंट कौन भाई लिमिटेड गवर्नमेंट तमे कहिला लिमिटेड गवर्नमेंट काहे की केमिति ओके कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो गोटे लिमिटेड गवर्नमेंट जहां चाहिबो कोन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करि परिबो जोडा बेसिक स्ट्रक्चर ताको कोन डिलीट करि परिबो जोडा फंडामेंटल राइट ता अगेंस्ट लॉ आनी परिबो तेनु एमिति किछि गवर्नमेंट अछि लॉ तयारी करूचे किंतु एमिति किछि लॉ तयारी करिबनी जोडा कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेशन करिवो जोडा बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेशन करिवो और फंडामेंटल राइट को डिलीट करिवो सेही केस रे कोन करिवो ना हमरा कोर्ट अछि जुडिशियल रिव्यू पावर यूज करिके सेटा नल एंड वॉइड डिलीट कर देबे तेनु हमरा एई केस रे हमें कहले कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज ए वेराइटी ऑफ मीनिंग सो मोस्ट जनरली it is a complex ideas attitude and pattern of behavior elaborating the principle of authority of the government derived from and is limited by a body of fundamental law constitutionalism means limited government or limitation of on the government it is antithesis of arbitrary power so constitutionalism recognize the need of the government with power but same time insist the limitation to be placed on those power तेनु तांकु पावर दिए जाय छै किंतु अनलिमिटेड पावर दिए जाय नै तमे जहा चाहिबो मन इच्छा करि परिबन तमे जहा चाहिबो संविधान ने चेंज करि परिबनी जोडा बेसिक स्ट्रक्चर सेगुडा को तमे डिलीट करि परिबनी तो ता ऊपर लिमिटेशन रेस्ट्रिक्शन अछि सेति पे हम एटा कोन कहूचे ओके constitutional government holds gote elected by public country through an election process head of the state has limited power tapre it has specific tenure rahila limit to the rule compulsory to be re-elected again okay तो एटा हमरा कोन होची ना तमरो यूनाइटेड स्टेट ऑस्ट्रिया पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हमरा कोउडा ना परफेक्ट इज ए परफेक्ट टाइप ऑफ मोनार्की टाइप रो ऑटोक्रेटिक मोनार्की टाइप रो जोडा रहला रूलर ऑफ द कंट्री हैज अनलिमिटेड पावर जेमति कि हमें कहबा नॉर्थ कोरिया तांका रूलर जहा कहबे फाइनल ओके so there is no ruling limit in case of non constitutional government it can be remain in power as long as it is one Brunei Qatar
स्वाजिलैंड वैटिकन सिटी जो पोप अच्छा एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और एब्सोल्यूट मोनार्की टाइप रो गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पुणी आउ थे 2021 रे पड़ीथिला कौन हम सेम जिनस में कहले तो आंसर हमर डी हे जिवो पुणी आउ गोटे हमर सेम 2023 रे पड़ीथिला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन हम अंकिता शुभश्री सागरिका राजेश ओम लिप्सा मनोरंजन फजल सोनाली ओके समस्त आंसर सी ओके ये जो हमें कहले लिमिटेड पावर दिया जाए हमर गवर्नमेंट को ओके सेम कांसेप्ट हमर रहला एटा हमें कहले पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कोन ए गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट तापर हमें कहले we adopt parliamentary democracy based on British model, but how does our model differ from that model? हमें British model तो adopt करिचे आम मॉडल आउ ब्रिटिश मॉडल भीतर डिफरेंस कोन अछि? Both 1 and 2. तो ये कौन ना सी हूँ हमारा करेक्ट आंसर है as regards legislation British parliament is supreme and sovereign, but in India the power of the parliament to legislate is limited। ठीक कथा अछि पार्लियामेंट को पावर दिया है लॉ तैयारी करिया पे कोन मन इच्छा जहा चाहिबो तैयारी करि परिबो कि तो एनजेसी एक्ट आनिथिले पार्लियामेंट आनिथिले नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी कितना नंबर अमेंडमेंट एक्ट आनिथिले 99 2014 रे आस्थिला किंतु पार्लियामेंट सेटा लॉ कला सुप्रीम कोर्ट सेटा डिलीट कला कहला जे नाडा इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी को हार्म करूची बेसिक स्ट्रक्चर जोटा कि तने माने लॉ करि परिबे किंतु तांकर लिमिटेड पावर तांको दिया जाय छै। Okay. In India, the matter related to constitutionality of amendment of an act of the parliament are referred to the constitutional bench of the Supreme Court. Okay. तो जोटा constitutionality हमरो constitutional bench को refer करा जाए और minimum केते जण गोटे हमरो ए constitution case टा को धरिबे minimum केते जण okay minimum हमरो एटा 5 at least 5 member okay so provision of the constitutional bench has been provided in the Constitution of India under article 143 and 145 subclause 3 it is the Chief Justice of India who is constitutionally authorized to constitute a constitutional bench and refer the case to it so minimum at least हमको 5 जन जज कॉन्स्टिट्यूशनल केस को हैंडल करेंगे मिनिमम सो आज जाए जो कॉन्स्टिट्यूशनल केस रे जो बसला मैक्सिमम को केस रे जो बेंच बसीथिला केशवानंद भारती केस रे केते जण हमर जज बसथिले 13 जण तो फॉर रे केते जण अगेंस्ट रे केते जण थिले 7 6 ओके 7 जण तार फॉर रे थिले अगेंस्ट रे थिले हमर 6 जण तो हमर होची केशवानंद भारती केस हां
ओके हमर जो राम मंदिर केस के जण बसले अयोध्या जो केसटा हेतिला सेथिरे के जण हमर के जणिया बेंच बसी के हियरिंग करथि एनीवन नो अयोध्या केस फाइनल जजमेंट जो हला न न अधिक थिले देवव्रत पूछने न 5 जण ओके ओके चेक करिवो तो एटा भी गोटे हमें which one of the following best describe the term state रोजालिन ए प्रियदर्शिनी सुचिस्मिता तपन अभिषेक सुनील सोनाली श्रुति ए हिजबो करेक्ट आंसर हमें स्टेट काहा को कहूचे हमें इंडिया गोटे कहूचे इंडिया हमर गोटे बाउंड्री अछि ना नहीं हमर इंडिया रा बाउंड्री गोटे अछि ता भीतर लोक रहउछन्ती गोटे हमर इलेक्टेड गवर्नमेंट रहउची एई सब गुडा को नै कि हमें स्टेट कहूचे ना नहीं तो सेति पई a community of person permanently occupying a definite territory हमें गोटे कम्युनिटी इंडिया रे रहउचे हमर गोटे पर्टिकुलरली बाउंड्री अछि ओके जम्मू एंड काश्मीर एकरे हमें धरि की अरुणाचल प्रदेश ईस्ट धरि की हमें रहिला साउथ रे हमें तमिलनाडु ओके अंडमान और हमर लक्षद्वीप को धरि की हमें कहले जे हमर गोटे डेफिनेट टेरिटरी अछि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल तो आमे पूरा टोटल सोवरेन कंट्री बोली कहूचे हम ऊपर कौन सी कंट्री नाही हम टोटली इंडिपेंडेंट एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट हमर गोटे गवर्नमेंट हमें इलेक्टेड करूचे गोटे गवर्नमेंट रहउचे तो एटा होची डेफिनेशन ऑफ स्टेट ए होची करेक्ट आंसर सो स्टेट रो एलिमेंट ऑफ स्टेट प्रथमे स्टेट कहा को नै कि हबो लोक माने को नै कि हबो लोक निहति रहिबा दरकार सो पीपल सो द कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली लिविंग देयर तो एटा होते सेकंड टेरिटरी टेरिटरी होची डिमार्केटेड बाउंड्री दैट सेपरेट वन स्टेट फ्रॉम अनदर थर्ड होची गोटे गवर्नमेंट रहिबो फोर्थ होची सोवरेनिटी इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल द डोमेस्टिक इंटरनल हो एक्सटर्नल डिसीजन हो सबु निजे नउथबो देयर इज नो एक्सटर्नल पावर व्हिच इज कंट्रोलिंग अस ओके सेति पे हमें कहले इंडिया गोटे सोवरेन कंट्री माने कोन ना नो अथॉरिटी above us we are the sole authority to take the decision in our internal as well as external factor ऊपर हमरो डिसीजन हमें निजे नै करियो फास्ट हमर होची कोन कमिटेड जुडिशियरी नुहे हमर इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एटा हमर रॉन्ग अछि ओके किंतु बेस्ट सेफगार्ड टू लिबर्टी को सेफगार्ड करिया पई गोटे लिबरल डेमोक्रेसी रे हमर कोन ना सेपरेशन ऑफ पावर अछि तमे जहा गवर्नमेंट हमर कोन होची ना तमे लॉ नै कि आसो किछ असुविधा नै किंतु जुडिशियरी हमर रहउची से चेक करिवो ओके सेपरेशन ऑफ पावर से चेक करिवो इफ तमरा लॉ टा जोटा नै कि आसी तमरा फंडामेंटल राइट को वायोलेशन होची किबा कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट रे तो सेटा को नॉल एंड भॉइड कर दो तेनु सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव तो एटा हमरा सेपरेशन ऑफ पावर जोटा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशियरी भितरे हमरा डिवीजन ऑफ पावर हेची चेक द अब्यूज पावर बाय अदर organ so this helps in checking the authoritarian tendency okay
एटा हम ऑलरेडी कहिथिले जे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस कोन ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके ऑलरेडी हमें डिस्कशन करथिले एटा भी कहिथिले which of the following the best reflect the chief purpose of constitution of a country it defines and limit the power of the government c एटा भी हमें डिस्कशन करथिले जुडिशियल रिव्यू माने कोन 2017 रे पडितला माने जो लॉ गुडा का हमर पार्लियामेंट नै कि आसीबो किंबा गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव माने सपोज कैबिनेट और काउंसिल मिनिस्टर किछि डिसीजन नेले से गुडा को हमर रिव्यू करिवो किए ना जुडिशियल रिव्यू करिवो सो ताकू जुडिशियल रिव्यू करिके देखिवो जदी ए गुडा को अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और संविधान रो बेसिक स्ट्रक्चर अगेंस्ट रे तो से गुडा को नॉल एंड वॉइड करिवो सो इट इज द पावर ऑफ द जुडिशियरी टू pronounce upon the constitutionality of law जो law टा आसिला whether it is according to the constitution it is right or wrong जदी right अछि त भलो कथा जदी एटा against the constitution against रे अछि ताहले सेटा कोन करा जिवो नॉल एंड वॉइड तो किछि लॉ हला किबा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जदी एटा constitution रो against रे ताहले सेटा को नॉल एंड वॉइड कर दिया जिवो तो से जो जुडिशियल रिव्यू करिक जो ताकू चेक करिवो जे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए ना अगेंस्ट रे तो सेटा को हमें कोन कहूचे जुडिशियल रिव्यू ए जुडिशियल रिव्यू पाई को केस रे हमरो जनरली एटा चेक करे जुडिशियल रिव्यू हुए ना जदी तमरो फंडामेंटल राइट ता इन्फ्रिंजमेंट हेछि वायोलेशन हेछि हमें कहले श्रेया सेंगल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जेते बेले दी जण झियो को अरेस्ट करनिया गला बिकॉज ऑफ कोन ना से फेसबुक रे जाई कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करले तो एई थिरे तांकर फंडामेंटल राइट जोटा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायोलेशन हला ना नै तांको काहे के अरेस्ट करा गला ना गोटे आईटी एक्ट सेक्शन 66 आईटी एक्ट ओके 66 ए हमरो आईटी एक्ट ला तो कहले जो एक्ट अनुसार तमे अरेस्ट करलो दैट इज रॉन्ग तमे फंडामेंटल राइट रो अगेंस्ट एमिति लॉ आनी परिबनी तो इमीडिएटली तांको रिलीज करबा संगे संगे से लॉ को भी पारे हमर कोन करा गला नॉल एंड वॉइड डिलीट करा जदी तमर फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंजमेंट होउची वायोलेशन होउची ताहाले तमर यू कैन चैलेंज इट इन द कोर्ट ओके फंडामेंटल राइट यदि वायोलेशन होउची सेकंड हला it's outside it is outside the competency of the authority which has framed it tapre if it is repugnant the constitutional provision तो ये तीनटा का केस रे जेमति पहले बेसिक स्ट्रक्चर यदि बेसिक स्ट्रक्चर को भी वायोलेशन करूची सही केस रे ओके सो जुडिशियल रिव्यू पावर ता हमर कोन ना आर्टिकल 13 रे अछि जदी हमें कहले फंडामेंटल राइट गुडा को वायोलेशन होची तमे जेतले सुप्रीम कोर्ट को जाउछ अंडर आर्टिकल 32 रे तो सुप्रीम कोर्ट कोन करिवो ना आर्टिकल 13 यूज करिकि देखिबो जुडिशियल रिव्यू पावर तो एथिरे देखिबो जे हमर फंडामेंटल राइट वायोलेशन हेछि ना नै 2019 रे पडिथिला ओके तेनु कोन हबा हमर आंसर बी हेजो तमरा एटा ही हमरा कोआ जाउछ ना तार जुडिशियल रिव्यू पावर को रिस्ट्रेन करा जाय कांस्टेंट करा जाय सो सुप्रीम कोर्ट इज नॉट कांस्टेंट टू एक्सरसाइज इट्स पावर
तो तार पावर अछि जो लॉ हमर पार्लियामेंट तयारी करिछि तो ताकू ये एग्जामिन करिवार पावर अछि ना नहीं ओके सो इट हमर विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया prohibition or limitation or provision contained in the ordinary law cannot act as a prohibition or limitation on the constitutional power under article 142 रे हमर से जो जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कथा कहै जाय छी तो एटा हमर आंसर 142 कोन ना स्टेट दैट Supreme Court in exercise of its jurisdiction may pass such decree may make such order as necessary for doing completely justice in any cause or matter pending before it. Okay, तो एटा होची तनु तार जुडिशियल रिव्यू पावर को हमरा यूज करके थे फास्ट हमर कम भी भूल आग हमर जज इंक्वायरी एक्ट 1968 कथा बाहर करिया प्रथमे तमे जने जज को बाहर करिया कहले सुप्रीम कोर्ट किबा हाई कोर्ट रो जज को कंडीशन कोन प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी तमर ओडे जज को बाहर करिया को हेले प्रथम क्राइटेरिया तमर को हाउस रे रेजोल्यूशन ता तमे इंट्रोड्यूस करि परिबो आइदर हाउस रे लोकसभा रे किबा राज्यसभा रे लोकसभा रे इंट्रोड्यूस करिया पई हेले केते जनकर साइन दरकार राज्यसभा रे इंट्रोड्यूस करिया कहले केते जनकर साइन दरकार हां लोकसभा रे 100 राज्यसभा रे 50 प्रथमे साइन करके देला रेजोल्यूशन पास करके कि हमें ए पर्टिकुलर जज को रिमूव करिया को छ देला परे रेजोल्यूशन तमे लेटर टा काहा को दबो आइदर तमे स्पीकर ऑफ द लोकसभा को दबो और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को दबो तांको देला परे तांको पखरे पावर अछि ना एक्सेप्ट करि परिबे रिजेक्ट करिवार पावर अछि ना नहीं तांको इच्छा पे डिपेंड करूछि तो सी आइदर एक्सेप्ट करि परंती और रिजेक्ट करि परंती हमरा जो रंजन गोगोई को केस रे हला ऑलरेडी 50 जन साइन करके देले ओके ऑलरेडी 50 जन साइन करके देले रंजन गोगोई को बाहर करिया पई जेतेले एटा हमरा सेतेले भेंकैया नायडू थिले वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो सी मना कर देले कहले ना एटा एडमिट करिया तो सेठी तार एंड हे आ आगु को फॉर एग्जांपल हमरा दी जन को जेतेले जा को देले सी सेठी हमरा जदी ऑन पे मामा लो ओके एडमिट कला परे कोन हबो ओके एडमिट कला पर कोन हबो ना ओडे 3 मेंबर इंक्वायरी कमिटी बसबो ए तीन जणिया इंक्वायरी कमिटी रे किए रहिबे जज जदि सीजीआई रंजन गोगोई निजे तांको नारे केस फाइल हेछि सीनियर मोस्ट आइदर सीजीआई रहिबे और सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जने रहिबे हाई कोर्ट रा सीजीआई जने रहिबे आउ एमिनेंट जूरिस्ट जने रहिबे तीन जण हमरो इंक्वायरी कमिटी से माने इंक्वायरी कला परे जो एलिगेशन गुडा लागि जदि प्रूव कर देले जे यस ही इज गिल्टी आइदर प्रूव्ड मिसबिहेव सेटे प्रूव्ड हे गला जे ये मिसबिहेव करिसथि बोली और प्रूव्ड हे गला जे इनकैपेसिटी ये वर्तमान बेड रिडन अछथि तांको ड्यूटी ठीक रे करि परिबे नाही ओके तापरे कोन हबो ना ईच हाउस रे हमरा सिंपल मेजॉरिटी पास हो ना स्पेशल मेजॉरिटी पास होला परे तापरे प्रेसिडेंट को पाखु को जिवो प्रेसिडेंट का ऑर्डर परे ताकू रिमूव करबो आउ तमे जानि छ जे आज जाय कोनोसी हाई कोर्ट किंबा सुप्रीम कोर्ट रा जज बाहरी ना ओके तेनु तमे एक एटा जो हमरा कहि छी कैन नॉट रिजेक्ट जे जने स्पीकर एटा को रिजेक्ट करि परिबे नाही रॉन्ग
स्पीकर किंबा चेयरमैन चाहिले रिजेक्ट करि परिबे तो 1 टा तमे काटि दियो एटा कटि गला 3 टा तो डेफिनेटली ठीक कोन ना द डिटेल ऑफ द जज process of impeachment of the judge of the Supreme Court of India are given in Judge Inquiry Act 1968 okay duita bhi kati gala the Constitution of India define and gives the detail of incapacity of rude misbehavior kon detail eta bhi nahi okay taapre rahi gala kon 4 if the motion of impeachment of a judge is taken up for voting the law require the motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of total membership of that house and 2/3 of not less than 2/3 माने स्पेशल मेजॉरिटी कथा कहि छी तो स्पेशल मेजॉरिटी रे हमरा पास हो तो एटा हमरा ठीक अछि ओके तो आंसर कोन हबो ना 3 and 4 हिजबो हमरा करेक्ट ओके तमे प्रोसीजर जानि छ लोकसभा रे तमे जदि रेजोल्यूशन पास करिया को चाहू छ ताहले 100 जन साइन करिवे राज्यसभा रे 50 जन साइन कला परे यू हैव टू गिव इट टू स्पीकर एंड चेयरमैन किबा स्पीकर सेटा को मे एडमिट करि परंती किबा एडमिट करि पारि न करि परंती जदि एडमिटेड कले तीन जणिया ओडे कमिटी बसिबो सुप्रीम कोर्ट रो जने जज चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस तो जदि से चार्ज इन्वेस्टिगेशन करी के फाउंड कले गिल्टी of misbehavior or incapacity से केस रे सी कौन करिवे ना स्पेशल मेजॉरिटी रे बोथ हाउस रे पास हला परे प्रेसिडेंट करा पाकु जीवन प्रेसिडेंट सेटा को ओके अप्रूव कला पर तनको बाहर करा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन in India legal service authority provided free legal service to which of the following type citizen को भरिया लोकन को हमर फ्री लीगल सर्विस दिया दियो था तमे गरीब लोक अछ तुमको मागणा रे गवर्नमेंट लॉयर प्रोवाइड करबो को केस रे ना पर्सन विथ एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख ट्रांसजेंडर विथ एनुअल इनकम लेस देन 2 lakhs member of OBC with annual income less than 3 lakhs all senior citizen okay तेनु आर क्राइटेरिया डायरेक्टली सब बेले लीगल सर्विस अथॉरिटी ऊपर पडुची तो क्राइटेरिया होची 1 एइथरे हमर कोन को लोक माने को फ्री लीगल एड सर्विस हमर दिया जिवो प्रथमे every person who has filed or demanded suit shall be entitled a free legal service कोन ना तमे जदी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हिच तुमको फ्रीली लॉयर प्रोवाइड कर एससी एसटी लोक को फ्रीली तमे जदी विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर as referred to the article 23 of the Indian Constitution हमें कहले फोर्स लेबर और तमे ह्यूमन ट्रैफिकिंग रो शिकार हिचो से केस रे इजे वुमेन और चाइल्ड जदी अछो इज ए पर्सन विथ डिसेबिलिटीज जोटा कि डिफाइन इन क्लॉज ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द पर्सन ऑफ द डिसेबिलिटीज तापरे हमरो ए पर्सन सब्जेक्टेड टू द कंडीशन अंडर जो अनडिजर्व डिप्राइवेशन फॉर एग्जांपल डिजास्टर कास्ट वायलेंस कास्ट एट्रोसिटी फ्लड ड्रॉट अर्थक्वेक ए सब केस रे तुमको फ्री लीगल एड is in custody of a protection home hela person having annual income less than the specific amount जदि तमरो annual income less than 1 lakh अछि किबा जदि तमे 2 लाख in case of transgender तो ई केस रे तुमको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करा छै With reference to Indian judiciary, consider the following statement. A retired judge of the Supreme Court can call back to sit and act as a Supreme Court judge by Chief Justice of India with prior permission of the President of India. A High Court has the power to review its own judgment as Supreme Court does. Okay? कौन हबो ना
ए हिजबा करेक्ट आंसर तमरो जतबेले हमें कहले रिटायर्ड जज जन को डका जाउची सुप्रीम कोर्ट रे टेम्पररी पई आसी काम करिया पई तो सही केस रे चीफ जस्टिस प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट कर परमिशन नबा निहाती दरकार ओके हमर जने सुप्रीम कोर्ट रा जज हवा पई कोन क्राइटेरिया में कहितले सुप्रीम कोर्ट रा जज केते हमरा आगा प्रथम इंडियन हेथिबे सेकंड 5 वर्ष हाई कोर्ट रा जज हिसाब रे काम करथिबे किंबा 10 वर्ष हाई कोर्ट रा एडवोकेट हिसाब रे काम करथिबे आउ कोन हेथिबे एमिनेंट जूरिस्ट इन द आईज ऑफ प्रेसिडेंट हेथिबे तीन एई सब उडा होची कंडीशन ओके एमानकर कार्यकाल केते वर्ष 65 6 और 65 ना खाली 65 ना कौन हाँ ना 6 और 65 पिला कहउछन 6 और 65 हुई जे बरे जियाला हाँ ओनली 65 नॉट 6 और 65 तमे 50 वर्ष रु जदी सुप्रीम कोर्ट रा जज हेच 65 वर्ष जाय तमे ओके 6 और 65 होची इलेक्शन कमीशन 6 और 65 होची तमरा यूपीएससी रा मेंबर चेयरमैन 6 और 65 होची हमरा सीएजी एमाने कर होची 6 और 65 किंतु तमरा सुप्रीम कोर्ट रा जज माने कर 65 इयर्स हाई कोर्ट रा जज (62) अच्छा हाई कोर्ट रा जज हबा पई कोन हबा दरकार तमे इंडियन हेतिबो आउ कोन हेतिबो सेठी 10 वर्ष आज हाई कोर्ट रा एडवोकेट आउ कोन थिला 10 वर्ष आज कोनसी जुडिशियल ऑफिस होल्ड करथिबो ओके कोन ना जुडिशियल ऑफिस होल्ड करथिबो ओके अच्छा सुप्रीम कोर्ट का जज को किया अपॉइंटमेंट करो हाई कोर्ट का जज को हाई कोर्ट का जज को किए अपॉइंटमेंट करो हाँ प्रेसिडेंट दियंती मु तुमको पचानी शपथ पाठ किए करांती ओके शपथ पाठ जदि हमें कहबा चीफ जस्टिस कि हमरो एमाने को सुप्रीम कोर्ट रो तो हमरो शपथ पाठ हमरो सुप्रीम कोर्ट रो हमें कहउचे प्रेसिडेंट करांती हाई कोर्ट रो एमाने ओथ एंड अफर्मेशन किए करांती ना हमरो गवर्नर हमरो ओथ एंड अफर्मेशन करिवे किंतु हमरो अपॉइंटमेंट देबे हमरो किए प्रेसिडेंट ओके आंकर सैलरी अलाउंस ता एठी सैलरी अलाउंस ता कोडी जाय सुप्रीम कोर्ट रो सैलरी अलाउंस सैलरी कोडी जाय एंड अलाउंस कोडी जाय हां कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आंकर सैलरी अलाउंस कोडी जीवो कोडी जीवो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट हो जीवो आंकर पेंशन टा कोठी जीवो सेही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रो आंकर पेंशन टा ना स्टेट रो ओके मने रखिबो तांका सैलरी अलाउंस जाउची कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट रो हाई कोर्ट रो किंतु तांका पेंशन टा जीवो पेंशन माने कोन रिटायर्ड हे गले असे स्टेट को सर्विस दउ ना थी अपॉइंटमेंट किए देथिले प्रेसिडेंट तांका कथा बुझी तो सेंटर सेति पई तांका पेंशन टा बुझुची हमर सेंटर किंतु तांका सैलरी अलाउंस टा बुझिबो किए ना हमर स्टेट ओके हमरा हाई कोर्ट रो किबा सुप्रीम कोर्ट रो एबे रिक्रूटमेंट होउची जो एएसओ हाई कोर्ट एएसओ तो तांकर जो सैलरी अलाउंस टा कोठु जीवो हां कंसोलिडेटेड फंड ऑफ
So all these जो हमरो जाउची consolidated fund of state रू किंबा इंडिया रू, so which type of expenditure this? Charge expenditure which are not subjected to the vote of parliament किंबा विधान सभा रो रेट हमरो vote हमरो होनी. Okay. आउ गोटे कथा होची ए जो आमे कहिले सुप्रीम कोर्ट रो हो कि हाई कोर्ट रो जज माने को अपॉइंटमेंट जो करा जाए ता पे गोटे कॉलेजियम सिस्टम अछि. सुप्रीम कोर्ट रो जज माने को अपॉइंटमेंट करबा को हेले जो कॉलेजियम सिस्टम रे के जन रहिबे. ओके सीजेआई रहिबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 जन सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. एटा सुप्रीम कोर्ट केस रे. हाई कोर्ट केस रे सीजेआई प्लस केते 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ओके एटा होची अपॉइंटमेंट केस रे. तांको रिमूवल जदि करिवार अछि सॉरी रिमूवल को ट्रांसफर करिवार अछि हाई कोर्ट रा जज को ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट रा तो नहीं हाई कोर्ट रा जज को जदि ट्रांसफर करिवार अछि तो कॉलेजियम रे केते जन रहिबे हां सीजेआई हमर सीजेआई रहिबे सुप्रीम कोर्ट रा. ओके प्लस एठी केते जन रहिबे 4 जन सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ओके प्लस जो हाई कोर्ट को जिबे ओके सीजे जो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जोठी की जिबे. ओके प्लस जो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जोठू जाउ छथि. ओके फ्रॉम टू ए सबु केस रे हमरो इज रहिबे. ओके सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज प्लस जो हाई कोर्ट को जिबे जोठू जिबे तांको भी हमरो कंसल्ट करा. ओके तो एति के हमरो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रो जो हमें आउटे सुप्रीम कोर्ट रे पढुचे जे एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट केते नंबर आर्टिकल 143. ओके एडवाइजरी जुरिडिक्शन रे प्रेसिडेंट हतो एडवाइस मागिबे तो जोडा हमरो प्री टीटी हमरो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी नुह से गुडा का हमरो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दबा पे बाध्य ना बाध्य नै मु कहली जे प्री ट्रीटी कॉन्स्टिट्यूशन नुहे तो एटा हमरो कोन बाध्य ना बाध्य नै बाध्य नुहे देई पारे न देई पारे किंतु जोडा प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी माने कॉन्स्टिट्यूशन तयारी हबा पूर्व किछि ट्रीटी अछि आ ताकू नै कि प्रेसिडेंट कंफ्यूजन हो जाय जे कोन लॉ कहउछि तो सेही भलिया केस रे हमरो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दबा पे बाध्य ना बाध्य नै सेही केस रे बाध्य मन रखिबो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी गुडा करे से माने एडवाइस दबा पे बाध्य जो एडवाइस से देबे सेटा प्रेसिडेंट मानिबे ना मानिया पे बाध्य ना बाध्य नै दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. आउट हमरा होछि जे हमरा ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का को केस गुडा का ओरिजिनल जुरिडिक्शन रे आसीबो धरा हमरो स्टेट भितरे सपोज ओडिशा आउ छत्तीसगढ़ भितरे डिस्प्यूट हैला रिलेटेड टू महानदी को. सो वेदर state dispute whether it will come under the original jurisdiction or not. Okay तो एटा आसीबो नाही काहे कि हमें कहले इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट इज नॉट कमिंग अंडर ओरिजिनल जुरिडिक्शन. जदी अलगा किछि डिस्प्यूट लैंड बाउंड्री ए सबुडा को डिस्प्यूट हे थार दैट इज डिफरेंट. तो स्टेट भितरे किछि डिस्प्यूट होउची किंबा स्टेट सेंटर भितरे किछि डिस्प्यूट होउची तो फेडरल यूनिट भितरे डिस्प्यूट हेले सेडा हमरो. अच्छा स्टेट आ यूनियन टेरिटरी भितरे जदी डिस्प्यूट हेला तो सेटा हमरो आसीबो ना आसीबो. दिल्ली आउ वर्तमान गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी आ अरविंद केजरीवाल का भितर डिस्प्यूट है तो एटा हमर ओरिजिनल जुरिडिक्शन आसीबो ना आसीबो नै
नहीं मो कहता सेंटर आउ स्टेट जो हमरा दिल्ली भितर होछि तो एटा हमरा डिस्प्यूट ता ओरिजिनल जुडिक्शन हबो ना हबो कौन दीपक हबोनी काहे के हबोनी वेरी गुड ओके जेहेतु दिल्ली गोटे यूनियन टेरिटरी तो सेति पई सेंटर आउ यूनियन टेरिटरी रो केस गुडा को हमरा ओरिजिनल जुडिक्शन अछि ओके स्टेट स्टेट भीतर हेले किंबा सेंटर स्टेट भीतर हेले तो दिल्ली गोटे यूनियन टेरिटरी एक क्वेश्चन हमरा पडितला तो सेति पई एटा हमरा ओरिजिनल जुडिक्शन अछि ओके ठीक अछि सो हमें नेक्स्ट क्लास रे बाकी उडा डिस्कशन करिबा आई हैव सम वर्क ओके सो नेक्स्ट क्लास रे हमें बाकी उडा को डिस्कशन करिबा हेलो सर हां को सर आपन जो ओडिशा के सेंटर स्कीम गुडा तार कंपाइलेशन मिलियो कन्फ्यूजन